let's talk about the life cycle of ameloblast. Okay, first of all, remember morph MPD. Okay, think of a person as morph, he's having MPDS. Okay, so let's start. So basically 6 stages in life cycle of ameloblast. Okay, morphogenic, organizing, formative, maturative, proliferative or protective only, desmolytic. Okay, in morphogenic you will see that the inner enamel epithelium, it interacts with mesenchymal. Basically we will correlate it with this diagram. See, this is morphogenic. Morphogenic में the basically what you will see is a conversion of low columnar to tall columnar. Okay. In organized, so this is first. Okay, morph. See, I will do it like this. Wait. Morph MPD. So first is morphogenic. So morphogenic name also would tell you low columnar to tall columnar. Why I am using the diagram? Because questions come from pictures. Now organizing may remember 3 points. Okay. So first point, organizing may reversal of polarity. Initially what you will see is it is present here and Golgi apparatus is here, mitochondria, cell organelles. Then it gets converted into this Golgi apparatus. I'm not good at drawing. So right, so reversal of polarity. Pehle this was the proximal end, this was the distal end. But now because nucleus has gone up, so this is proximal and this is distal. Okay, just remember this much. So reversal of polarity plus reversal of nutrition. Now why this is occurring? See, if you remember something, so this is the stage, right? Here we have inner enamel epithelium which is differentiated into ameloblast. So over here what we see is there is dental sac, right? Now nutrition will come from dental sac. To receive from dental sac we need nucleus towards the direction of dental sac, so that is why dental sac is here, and then it will pass into the vesicles of Golgi apparatus and then it will provide nutrition नीचे. ठीक है, पहले it was getting from dental papilla, now it's getting from dental sac the nutrition. Okay, so 2 points only, reversal of polarity and reversal of nutrition. Now in formative you have to remember Tomes process. Now see, this is converting into tall columnar, फिर nucleus ऊपर चला गया. ठीक है, just remember this much. Now over here see this structure, this is Tomes process. Now what do you mean by Tomes process? Tomes process is functional unit of enamel. Tomes process ही है जिसके कारण there is the secretory action of ameloblast. Okay, without Tomes process no secretory action of the ameloblast. Okay, now what does this mean? In Tomes process, very important point to remember is distal and proximal देता क्या है. See, Tomes process is something like this. ठीक है, so see, this will be the proximal end and this will be the distal end. Always remember DAR. So distal will give rod and proximal will give interrod. Okay, this is important, just remember this much. Then see, just a revision, shape is changing. ठीक है, reversal of polarity, reversal of nutrition. Formative में you will have the Tomes process, functional unit of enamel. Yes, informative only you will see keyhole pattern बन जाएगा. ठीक है, इसमें ameloblast differentiate करेंगे, पहले dentin बनता है फिर enamel. Always remember first dentin then only enamel. Reciprocal induction. Okay, then MOFMPDS. Maturative में you will see, very important, how to recognize. See, if you see Tomes process, just mark it as formative. If you see like this ruffled border, that means this is going to be maturation. Okay, ruffled border, maturation. Why ruffled border? Because it helps in absorption
So maturation border. If you start seeing smooth border, so protective stage, and if size is decreased, so desmolytic stage. Okay. Now in maturation also, what you will see is कि जो matrix है that is being, yes, there was a line as I told you earlier also here, enamel proteins do not contribute to structuring of enamel. See, पहले ही we know कि enamel proteins is only 4%. So what happens is पहले तो enamel proteins ही होते हैं, they get reabsorbed, okay, reabsorbed by the ruffled border, then replaced by hydroxyapatite crystals, minerals. So दैट इज़ व्हाट हैपन्स कि क्रिस्टल ग्रोथ होगी और जो मैट्रिक्स में जो एब्जॉर्प्शन है, मैट्रिक्स ऑलवेज रेफर्स टू ऑर्गेनिक, मैटर रेफर्स टू इनऑर्गेनिक. ओके, सो बेसिकली प्रोटीन्स है वो रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे, ठीक है, ड्यू टू विच व्हाट यू विल सी इज कि मिनरलाइजेशन हो रही है, ठीक है, रफल्ड बॉर्डर है, इसमें टोम्स प्रोसेस भी डिसअपियर हो जाएगा बिकॉज नो मोर सिक्रीशन इज नीडेड. प्लस स्टार्टिंग ऑफ एपोजिशन. एपोजिशन क्या होता है? बेसिकली इंक्रीमेंटल डेपोजिशन ऑफ मिनरल्स, क्योंकि मिनरल्स हो रहे हैं तो क्रिस्टल ग्रोथ हो रही है. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलवेज आस्क्ड इन एमसीक्यूज कि इनामल कौन सी स्टेज पे कंप्लीटली फॉर्म्ड है, एट व्हाट स्टेज इज इनामल कंप्लीटली फॉर्म्ड? इट इज़ मैच्योरेटिव स्टेज. बट एट व्हाट स्टेज इज इनामल बीइंग फॉर्म्ड? Formative and maturative. Okay, then protective में simple, you have a smooth border. Okay, so basically calcification maturation चल रही है, ठीक है, reduced enamel epithelium is formed. Now desmolytic stage is very interesting. In this what you see is reduced enamel epithelium releases a lot of enzymes, proteolytic enzymes, MMPs, osteoclast activating factors, then you have serine proteins and something like this. So what they do is MMPs में, ठीक है, दे लाइज द, देखो, हेयर यू नीड टूथ इरप्शन टू अकर. सो यहाँ पे तो ऑल कनेक्टिव टिश्यू इज देयर ना. सो व्हाट हैपेंस इज इसकी रिड्यूस्ड इनामल प्रोड्यूसेस एमएमपी जो कोलेजन को लाइज कर देता है. देन बोन इज ऑल्सो प्रेजेंट, सो ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिवेटिंग फैक्टर इज ऑल्सो इनिशिएटेड, सो ड्यू टू विच ऑस्टियोक्लास्ट आर एक्टिवेटेड, सो बोन रिजॉर्प्शन ऑल्सो occurs, and then there is active eruption of the tooth. Now oftenly, very often asked in viva questions and so on, कि why there is no bleeding during extraction, sorry, not during extraction, sorry, during eruption. So why so? Because जो MMPs हैं उन्होंने कोलेजन भी ख़त्म कर दिया, ऑस्टियोक्लास्ट ने बोन भी ख़त्म कर दी, तो जो ये एपिथेलियम ऊपर रह जाती है इट बिकम्स रियली डेड. सो सिंस डेड एट डिसोल्यूशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, कोई न्यूट्रिशन ही नहीं जा रहा, सो एपिथेलियम डेड हो गई और फिर बस उसने उसे इरप्ट कर दिया. सो वाई इट इज़ डेड? बिकॉज ऑफ एक्शन ऑफ रिड्यूस्ड एनामल एपिथेलियम. सो देयर इज नो ब्लीडिंग ड्यूरिंग इरप्शन. ओके, so I hope I made the life cycle of ameloblast easier for you. So let's just sum up once again. See, small to big, low columnar to low cuboidal to tall columnar, we see कि morphogenic, morpho, ठीक है. Then we see कि organization हो रही है, Golgi body is coming down and the nucleus is going up. So this is proximal, this is distal. So this is organization. Okay, then टोम्स प्रोसेस आ गया, जस्ट रिमेंबर फॉर्मेटिव, FT फॉर्मेटिव. ओके, रफल बॉर्डर आ गया, मैच्योरेटिव, स्मूथ बॉर्डर आ गया, प्रोटेक्टिव, साइज छोटा हो गया, डेस्मोलिटिक. जस्ट दिस इज हाउ यू विल हैव टू सी इन दी फोटोग्राफ ऑल्सो एंड टू जस्ट मेक आउट कि व्हाट इज द करेक्ट आंसर. की होल पैटर्न हेक्सागोनल, ठीक है. सो दिस इज व्हाट इज ऑल इन दिस. सो यस, this is what is important. Amelogenesis, ठीक है. Now amelogenesis is just a formality if you have understood the life cycle of ameloblast. So पहले तो organic matrix formation, जो secretory activity है ameloblast की, ठीक है, enamel, okay, formation, appearance of टोम्स प्रोसेस हो जाएगा. डिस्टल टर्मिनल बार क्या होता है? जो जंक्शनल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं टोम्स प्रोसेस में, उन्हें डिस्टल टर्मिनल बार कहते हैं, ठीक है. इसके कारण क्या होगा? एक्स्ट्रा सेलुलर डिग्रेडेशन ऑफ अमीलोजेनिन प्रोटीन बाय MMPs इनटू नैनोस्फीयर्स बिटवीन विच क्रिस्टल्स फॉर्म. सो बेसिकली जो ग्रोथ ऑफ क्रिस्टल्स है, इट इज, यू हैव टू जस्ट रिमेंबर द मॉलिकुलर बेसिस फॉर INICT. Amelogenin, tyrosine-rich amelogenin and leucine-rich amelogenin, they are regulating the growth of crystals. Ameloblastin and enamelin, they regulate the nucleation, and tuftilin cell signaling. Remember this. Crystal secreted and finally keyhole pattern is formed. Very important. एक और है, for head you need 1, for tail you need 3 rods. So basically you need 4
four basically. For keyhole you need four ameloblasts together to form one rod and four and parts of four rods. Okay, then crystals, they will grow, they will mature, then some of them basically ameloblasts will go apoptosis, then ameloblasts alternate cyclically. Modulation. Now one more question oftenly asked is ki how many modulations of ameloblast occur in one day. So remember, modulation of ameloblast occurs many times in day, every 5 to 7 hours. Okay, just remember this. फिर रफल बॉर्डर है, सो इट विल अब्जॉर्ब द मैट्रिक्स, देन यू सी की कैल्शियम बाइकार्बोनेट की जगह आ गए हैं. ठीक है. मिनरलाइजेशन कैसे होगी, सेम ही चीज़ है कि पहले तो पार्शियल. हाँ, ऑलवेज रिमेंबर कि जो एनामल है ना उसकी 30% पहली मिनरलाइजेशन हो चुकी होती है. सी मिनरलाइजेशन हो जाती है पहली स्टेज में. फिर जो सेकेंड स्टेज आती है, देयर द कंप्लीशन ऑफ मैचुरेशन अकर्स, मिनरलाइजेशन अकर्स. द हाइट, जब मिनरलाइजेशन होगी तभी क्राउन की हाइट बढ़ेगी एंड ग्रोथ ऑफ क्रिस्टल्स. वैसे दिस इज ऑल राइट, जस्ट नो ये अच्छा है. रेट ऑफ इनामल फॉर्मेशन 4 माइक्रोमीटर पर डे होगा. ठीक है. यानी कि 240 डेज लगते हैं 1 mm थिक इनामल फॉर्म करने के लिए. ऑल राइट, सो this is amelogenesis. All this is same. और just remember picket fence arrangement किसकी होती है, Tomes process. ठीक है. Alright, ये सारा same. It's given same. This is also this only. This whole diagram is all this what is referred in this. Yes.